वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो एक मेकअप हॉल है। आई रिसेंटली केम बैक फ्रॉम इंडिया और मैंने वहाँ से बहुत सारा मेकअप ख़रीदा क्योंकि मैंने अभी अपना मेकअप कोर्स कंप्लीट किया है और मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रही हूँ इन दुबई, ऑल्सो इन इंडिया व्हेन आई एम विजिटिंग। सो मेकअप तो चाहिए था एंड बर्थडे नायका का बर्थडे वीक चल रहा था। देयर वाज अ सेल, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू पिक अप फ्यू थिंग्स which I will love. So let's get into the video. So I bought quite a few, like a lot of makeup और let's start. सो ये मैंने बैग भी ख़रीदा है, मैं मेकअप बैग ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है। प्राइजेज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी समवेयर, सो आप देख लीजिएगा। कुछ चीज़ अमेज़ोन से है, कुछ चीज़ नायका से है। सो हम फेस से शुरू करते हैं। तो फेस मैं मॉइस्चराइज़र से शुरू करती हूँ। सो मॉइस्चराइज़र मैंने एम्ब्रोलिस का लिया। सो इट्स अ वेरी ग्रेट मॉइस्चराइज़र। आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास ये देखेंगे। इट्स वेरी हाइड्रेटिंग and it is good for oily to dry skin. Everyone can use it. Then I bought a serum that's Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. ये मेरे लिए है। मैं इसका मैं ये ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। सो ये मेरा रीफिल। इसकी बात ही कर रहे हैं। सो आई गॉट नायका स्ट्रोब क्रीम। मैंने ये किसी और को यूज़ करते हुए देखा था एंड आई लव्ड इट। बहुत अच्छा है, ग्लो बहुत अच्छा देता है। Currently I'm wearing it under my base and it is giving very glowy, very skin, मतलब skin से वो glow within से आता है ना। Then I got two foundations from MAC in mini to be precise, because I had to like get 3 foundation. I am NC42, so I have NC42 for darker deeper skin tones, and then darker skin tone. Then I have NC35. I got NC35 and NC20. These are for NC20 is for fair, and then NC35 you can mix and match. 35 is also for medium. You can mix with like this is from fair to medium, this is fair. So this is what I got. Next is complexion palettes. I got 2 complexion palettes. There's NC40, that's for deeper medium deep skin tone, and this is for light. I'll show the difference of it. This is for darker skin, as you can see, all the dark and correcting, and then you can use this for concealing. Then आप ये contour के लिए use कर सकते हो. This is correcting, and then उसको neutralize करने के लिए you can use the yellow. Same way, this is for lighter skin tone. This for lighter skin tone, you can mix with this and work it out. So these two will suffice my need for correcting and concealing everything. Then I got a NC20 powder. This is the face powder, compressed like face powder, the Studio Fix, everybody knows about it. So this is NC20. I have NC42 also, so I will use both. 2 things I really wanted to try and I did buy it. Those are super expensive. I am a little scared, and I'm little scared to कि ये टूटा जाए, but still. So I got Charlotte Tilbury. Yes, I finally got Charlotte Tilbury. So I got this bronzer, airbrush bronzer in the shade medium. A very pretty, very nice bronzer. I'm currently wearing it, and it's so easy to blend, and it's very pretty. It's very pretty, very very nice texture. I'm telling you, मतलब this blends like magic. So I got Charlotte Tilbury से bronzer face products. Now I bought another thing from Charlotte Tilbury. That's their setting spray. Oh, people rave about this setting spray, and I haven't used it. We'll see how this works. And apart from that, I bought another setting spray. This is Pack Micro Finish. I have used it. It is
very nice, very hydrating, and very good. Like the mist is so that you can't even see it. See, the mist is so mild. Oh. And the smell is also very nice. Then I bought some eye products. So first one is NYX का sketch liner. I wanted to try it. और मेरे पास sketch liner भी नहीं था. So it is very nice, very pigmented, very dark, and the tip is also very nice and not that expensive because liners तो बहुत जल्दी सूखते हैं. तो it is very important कि ऐसा हो कि आप बहुत एक्सपेंसिव भी ना लो और बहुत सस्ता भी ना लो कि वो चले ही नहीं. एंड सेकेंड थिंग आई गॉट वन मैक प्रेप एंड प्राइम आई बेस बिकॉज समटाइम्स क्लाइंट की आई लिड्स बहुत ऑयली होती हैं. इट्स वेरी हार्ड टू make the eyeshadow stick to the eyelid, so this works wonder. And then I got Inglot ka Duraline. Everybody knows about Inglot Duraline. And then Inglot का eyeliner, जेल लाइनर. दिस इज़ फैब. मतलब मैंने अपने कोर्स में यूज़ किया था एंड इससे पहले मैं आई मैजिक यूज़ कर रही थी. आई मैजिक ड्राई हो जाता है थोड़ा, मतलब अगर आप थोड़ा ओपन में रखो. ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा अगर आप ओपन में रखोगे, बट इसकी कंसिस्टेंसी is very nice and it gets like you swipe it and it is the darkest eyeliner. It is the darkest eyeliner. Then I got one eyeshadow palette that is Eyes Can Kill मार्स का आई शेडो पैलेट. मैंने काफ़ी सुना था इस आई शेडो पैलेट के बारे में एंड आई वुड रियली वांटेड टू ट्राई इट. सो प्रिटी कलर्स, सच प्रिटी कलर्स, एकदम बहुत ही प्यारे कलर्स हैं एंड एवरी कलर you will need is in here. So matte eyeshadows and then they have shimmer also. So it's a very good palette. इस palette के अलावा I got one iMagic का Pro blush palette. It's very nice. Every skin for every skin tone from mauve to peach for darker skin tones also, pink, everything is there. So this is next I got. And also a different thing that I got was this is Athena's face paint. So I wanted to try some very different looks and like what I learned in the class. मतलब अगर if you follow me on Instagram, अगर आप मुझे Instagram में follow करते हैं तो you might have seen कि मैंने face paint भी सीखा in my class. तो उसके लिए I wanted to try this. I haven't opened it. इसमें ये सारे colors हैं and there are like quite a few colors. There are 18 colors in total, white, black including. और इससे हम बहुत कुछ create कर सकते हैं. Let's see what I will come up with in this. Also, I got 2 perfumes. I really wanted it. And perfumes, I don't know why they are expensive in Dubai. Then if I got these from Delhi Duty Free, and there it was cheaper. So for me, I got Lancome Idol. This is a very like this is a very I think flowery smell, I would say. बहुत अच्छा है and I love this perfume. I have heard about it. I did heard about it from quite a few YouTubers. That's good. But when I tried it, I'm telling you, like from past 3-4 months, whenever I'm going to the airport, हम थाईलैंड गए, मैंने जहाँ जहाँ देखा है ना, I have checked कि कहाँ cheaper है. And finally in India duty free, Delhi duty free, it was cheap. So I got this. And one perfume for my husband. So when I met him,
सो जब मैं उनसे मिली थी तो ही वॉज वेयरिंग दिस परफ्यूम एंड आई हैव दैट मेमोरी एसोसिएटेड विद दैट, बट उन्होंने वो परफ्यूम पूरा ख़त्म कर दिया एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि थोड़ा सा परफ्यूम बचा लेना चाहिए जस्ट फॉर दैट मेमोरी से, एंड आई गॉट इट. सो this they discontinued and again they have started, but they have and now in small bottles. I don't know why. So this is Burberry Weekend and I love this smell करते ही मुझे वो memories सारी याद आते हैं, how we met and everything. So yeah, it was बोलते ना कि it took me back to that day when we first met. Yes. देन आई गॉट फ्यू miscellaneous चीज़ें भी हैं, जैसे दीज मिनी स्पंजेस फ्रॉम पैक. आई लव पैक स्पंजेस. सो मुझे अंडर आई सेट करने के लिए मुझे मिनी स्पंजेस चाहिए थे. सी हाउ मिनी दीज आर and how beautiful, like they works wonder, they are perfect for under eye. So I got these. This is a pack of 4 and then I got a normal sponge. This is also the pack classic sponge and this is in pink, like very pretty and बहुत अच्छा चल जाता है. मैं अभी currently I have a red and I have 2 blacks, 2 reds with me. I use it for my personal use. Next thing I got from duty free is Estee Lauder's Double Wear Foundation in the shade 4N2 Spice Sand. So this is a 4N Spice Sand. Hopefully this matches. तब तो इतनी lights थी. Let's hope this matches. One more thing is left. Apart from the freebies, I got some freebies. This is Charlotte Tilbury's Pillow Talk in medium. Pillow Talk medium, because I really wanted to try this, though we have so many dupes of it, but I could never figure out like I could never find the dupes because it's always out of stock. तो मैंने ये Charlotte Tilbury का ये very nice pinkish nude shade है ये and it's very pretty. 3 freebies from Charlotte Tilbury. First is their airbrush flawless finish complexion perfection in the shade medium. That was good, like because I am medium, so it's so tiny. See like how tiny this is, like very tiny. So this is one thing I got in freebie. Very pretty, easy to carry. Then second thing I got was their airbrush flawless foundation. अब मुझे ये फाउंडेशन भी ट्राई करना है. मतलब मैंने ट्राई कर चुका है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट्स लाइक आपकी इट्स लाइक सेकेंड स्किन. बहुत ईजी टू ब्लेंड, बहुत अच्छा है. मैंने अपनी क्लासेस में ट्राई किया था. आई वॉन्ट टू बाई इट. आई विल बाई इट सून. अभी के लिए काफ़ी कुछ ले लिया था. सो दिस इज़ फॉर न्यूट्रल. This is neutral shade. I think I can work with it. I will like with bronzer and contour. I think I will work with it. And the last thing which I got as a freebie was Charlotte Tilbury's Magic Serum. I've heard a lot about this. That's very good. It's very nice. Let's see how this works. It's very teeny. I am excited about this. So I think that was it for the haul. I hope you like it. अगर आपको पसंद आया और अगर आपको कोई लिंक चाहिए हो तो please do let me know. I will be putting the links down in the description also. If you want to try, you can buy it. And अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.